सर आप यकीनन जानते होंगे कि इतिहास में अलग अलग काल हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग लोगों ने शासन करा है, बिल्कुल अलग अलग युग आए हैं। बिल्कुल आए हैं। तो ऐसे ही एक वाइकिंग युग था, वाइकिंग एज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा जी जी। तो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है उनका इतिहास में। अच्छा जी। तो आज हम उन्हीं से संबंधित एक वीडियो देखने जा रहे हैं। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंटरी है हाँ जिसको एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा आपको। हाँ। आप इसे देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। सर कौन से इलाके की आप बात कर रहे हैं? सर ये बात है यूरोप की। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया। यूरोप, रोमन, ग्रीक, हाँ, ये सब लोग आए भेजे में। बहुत मशहूर और महान शासन किया रोमन और ग्रीक ने। हमने इससे पहले वीडियो देखी है उनकी। हाँ सब यहाँ पे बात आ रही है वाइकिंग की, और ये वाइकिंग का नाम तो मैंने शायद पहले बार में हाँ। हिस्से में कभी नाम नहीं सुना मैंने। और बाबू आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कहा जाता है कि वाइकिंग्स ने क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले अमेरिका की खोज कर ली थी और वहां पे होकर आ गए थे वो। अच्छा हो। ये तो सब जानकारी वो अच्छी मिली कि वो उस टाइम पे अमेरिका को खोज करके वो होके भी आ गए। कमाल की बात है। ये तो हम भी जानते हैं, दुनिया में जानते हैं कि कोलंबस ने ही अमेरिका की जो है कि खोज करी। हाँ लेकिन हकीकत में वो पहले भी ये तो आज पता चला अपने को यार। यार कोलंबस उस वक्त में अपना बेरी बेड़ा जहाज बना है, तकनीक इस्तेमाल करी, तब जाके वहां पहुंचा। हाँ तो क्या इनके पास उससे पहले भी तकनीक आ चुकी थी इस प्रकार की? यार लेकिन जब अगर ऐसी बात अगर हो रही है भाई, सामने वाला कोई भी काम कब करेगा कि उसको चीजें होंगी या उसको ये याद होगा तो वो चीज के इजाद करेगा। अब वो चीज उसके पीछे इजाद करा नहीं होती तो इजाद कैसे करता भाई? हाँ अब सर इतना महान साम्राज्य रहा तो वाइकिंग को जरूर देखना चाहेंगे सर। लगाएं क्या चीज आखिर। 793 in Lindisfarne Monastery here is a little bit on fire. It was set on fire by a group of raiders, commonly known as Vikings, who saw the wealthy, poorly defended monastery as easy pickings. Which, to be fair, it was. The raid on Lindisfarne is often considered to be the beginning of the period of European history known as the Viking Age, because hereafter the number of seaborne raids and the amount of Viking activity across Europe increased dramatically. So who were these Vikings? ओहो, वाकई यार बाबू भाई बहुत दिलेर सेना होगी यार, जब तो पूरे यूरोप के आसपास के इलाकों में जो है कि कब्जा करना चालू कर दिया उन्होंने। Well, they originated from Scandinavia, what is now Denmark, Norway and Sweden. Be aware that these weren't a single group of people. They had different social and religious practices and were more than happy to raid each other when it was profitable. अच्छा बाबू देखो कि 3 देश का मिला के स्कैंडिनेविया किलरिया, मतलब वो आसपास के कबीलों के होंगे और वो मौका पड़ने पे एक होके वाइकिंग्स खिला है और राज करा उन्होंने बाबू भी। लेकिन बाबू भी ऐसा क्या मामला बना साला कि मतलब कि वो आपस में भी लड़ लेते थे यार? ऐसा कैसा लालच यार? यार लालच जो है बड़ी बला होती तो वो चक्कर में लड़ लेते होंगे यार। Speaking of raiding, Viking has become synonymous with raider, but it's important to note that many Vikings were simply seaborne traders and most stayed at home farming. Farming in Scandinavia was a mixed bag, and in the north of the Viking territories it was practically impossible because cold. Southern Denmark and parts of Norway and Sweden were actually quite good for farming, but population growth meant that other means such as fishing was needed for sustenance. The difficult climate and terrain of Scandinavia also made governing the people there very difficult. Kings often ruled with a light touch, since commanding someone who was on an island, over a mountain or on the other side of a dense forest wasn't that easy. अच्छा अच्छा यार ये क्या है कि वहाँ पर फसल के लिए जगह को सही नहीं थी। अब सबसे बड़ी जरूरत क्या है? फसल। अब वो सही नहीं थी, उसकी वजह से वो वहाँ से निकले वहाँ से। अच्छा बाबू भी रहते हैं जटिल इलाकों में, बीच में पहाड़ फंस जाते हैं, तो दूसरे लोग जो है कि हमला नहीं कर पाते होंगे, करते होंगे तो असफल रहते होंगे, और इनको आसानी रहती होगी, मतलब हारते कम होंगे जीतते ज्यादा होते होंगे। ये हो। That said, force was one of the primary ways of securing loyalty, along with rewarding followers with gifts. There were some areas in Scandinavia which were pretty good in terms of resources, and it was around these areas that power coalesced. The history of Scandinavia during the 9th century is shrouded in myth and legend, and frankly there is very little that can be said as definite fact. Just a quick note on names too. We'll be using the names Danish, Swedish and Norse-Norwegian, but be aware that the borders in Scandinavia weren't settled and that people simply lived wherever was habitable. अरे यार मतलब क्षेत्रफल बड़ा था लेकिन जहाँ रहने की जगह थी वही रहते थे वो, मतलब पीछे का बहुत सारे इलाके बंजर पड़े होंगे वो। अब सबसे बड़ी बात क्या बोली उन्होंने कि वहाँ पर किसी तरह की कोई नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, जिसको जगह मिलती थी अपना मरते था वो, तो इसमें वो दिक्कत नहीं थी।
Anyway, in the 9th century, Norway, named after the sea route along its coast, the Northern Way, was a land of many petty kingdoms who rose and fell as they vied for dominance. That is, until a certain king, Harold Fairhair, shows up around 872, but again, no one knows for sure. It was he who established a power base over the course of a few decades, gained overlordship over the north, and then defeated a confederation of petty kings at the Battle of Hafrsfjord. And it was after his victory that Harold declared himself to be the first king of the Norwegians. अच्छा बाबू, हेराल्ड जो आने से पहले इतनी मजबूत पकड़ नहीं थी। हेराल्ड के आने के बाद उसने जो है कि चीजों को जगह जीती और अच्छी मजबूत पकड़ जमाई और बड़ा साम्राज्य पे राज करा उसने। अच्छा, अभी तो कल उसकी शुरुआत नहीं फिलहाल अभी तो। और देश कब्जा कर चुका हो। In what is now Denmark, the 9th century isn't much clearer, and actually the name Denmark wasn't used until about the year 930. अच्छा, देश का नाम बाद में क्या गया, उसमें कोई देश था ही नहीं। तो बॉर्डर ही नहीं थी, तो देश भी नहीं बने होंगे। It is known, though, from the records of the Frankish Empire of Charlemagne that some of the lords who lived there wielded a great deal of power and that the Danes were noted fighters. In Sweden, named after the Svea people who lived here, there is loads of evidence about what happened down to the tiniest minutiae. Oh wait, no there isn't. What can be said for sure, though, is that the people that lived there lived mostly in these areas, and that the Svea made a great deal of contact with their neighbours across the Baltic Sea. Also, shockingly, it was divided into petty kingdoms. It's also known that the Swedes made regular contact with the Sami people from the north, and it's likely that some of their religious practices were adopted from them. ये मसला है। अब बाबू देखो, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, इन तीनों का जो है कि तालमेल होने की वजह से इनका जो है संस्कृति भी एक नजर आ रही है और बहुत अच्छा कनेक्शन नजर आ रही है तीनों में। यूरोप के जो दूसरे क्षेत्र जैसे जर्मनी, फ्रांस, वो काफी दूर होती, तो संपर्क इतना उनका नहीं बने होगा। अब अभी तो फिलहाल इतना नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। So whilst not a great deal is known about Scandinavia itself during this period, the people from there certainly made an impact in other places. The 9th century saw widespread raiding across Western Europe, such as those on Francia between 840 and 850. The Franks fortified their coasts and rivers, which forced the Vikings to turn their attention elsewhere. To the British Isles. The British Isles had been subject to Viking raids throughout most of the 9th century, and its wealth attracted many, mostly from Denmark, to come and take it. अब लगता है इनका टाइम आ गया बाबू। The 860s saw the landing of the Great Heathen Army in Britain, which devastated many of the Anglo-Saxon kingdoms there and made a lot of money doing so. The Norse, those from Norway, raided their way across the northern and western coasts of Scotland and ended up at the island of Ireland, where they did yet more raiding. The reasons behind Viking raiding are fiercely debated and range from a lack of arable land back home to cope with population growth to honour-based or semi-religious reasons. ये सब कारण थे जिसकी उनको बाहर निकलना पड़ा और ये सब कुछ करना पड़ा। क्योंकि बाबू एक तो ऐसी खाने की जो चीज है नहीं, ये जनता जो है कि बिखर जाती है, इसलिए उसके लिए जो है कि संसाधन इकट्ठे करना, तो भैया लड़ो उसके लिए। बस ये चक्कर था। More on that in a bit. The Great Heathen Army soon changed from one of raiding to one of conquest, and in short time they conquered and settled this area, subsequently called the Danelaw. The Norse conquered most of the northern islands across the British Isles and also settled places like Dublin and Cork, which soon became important slave trading hubs. मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय ब्रिटेन जो साम्राज्य है वो इतनी तो नहीं था। अभी तो फिलहाल वाइकिंग से कब्जा करते हुए दिख रहा है आसपास मुझे। अभी जो वो वाइकिंग से बदले। To the north lay the uninhabited island of Iceland. Iceland was settled by a man called Ingolfur Einarsson, who settled Reykjavik in 874, and unlike the rest of Europe, no one lived there, and so settlement was done without violence. The Norse also settled the Faroe Islands here, but no one knows when for sure. Expansion wasn't limited to the west or to the north. The east also saw a great deal of Viking, mostly Swedish activity. The Vikings moved south, settling, raiding and trading until they came to the Black Sea and made contact with the very wealthy Byzantine Empire. वाह यार बाबू, बिजंताइन साम्राज्य तक पहुंच गया, वाकई बहुत आगे तक निकल गया यार। पूरब में भी और पश्चिम में भी, दक्षिण में भी, हर तरफ छापे मारे और तरक्की चल रही है। There's a lot of questions concerning the manner of Scandinavian settlement in Eastern Europe and to what extent they dominated the region. However, they were definitely deeply involved in the politics of the area, and it made the Vikings there very wealthy. अब देखो बाबू, अब जाके उनको जमीन भी प्राप्त हो रही है, पैसा भी प्राप्त हो रही है और नाम शोहरत भी प्राप्त हो गई। अब जो कि मजबूत संगठन बना है। यार मेरे को ऐसे लगता है ये बहुत छोटी सेना थी, लेकिन ये बात तो मैंने ये बहुत दिल आगे जायजा वो मार के गया, सेना छोटी लेकिन इनकी हिम्मत और बहुत स्टिक थी यार। The Vikings brought great change with them to the places they settled. Generally speaking, the Vikings were much more urbanized, and they expanded major settlements like York, Dublin and Kiev, which became deeply intertwined with European trade. यार ये तो इतने मशहूर शहर, आज तक मशहूर शहर, उन्होंने बसाया जाके देखो आप, डबलिन, कीव करके नाम कितना आते हैं इनके, देख लो आप।
The social changes they brought with them varied depending on the region, but the primary area of conflict between the Vikings and those they conquered was that of religion. So the Viking religion was a form of Germanic paganism and is extremely complicated. There were many gods and not all Vikings worshipped the same gods. There were also the Norns, who determined a person's unchangeable destiny, and this idea of a set fate was extremely important. लो बाबू, वो थोर की भी पूजा करते थे, जिसके तूने फिल्म देख चुके हैं। वो थोर? हाँ, वो थोर। तो आप कहानी में जानने की मिलता ही है, तो कमा रहे हैं। For example, if you were destined to die in combat, you would ideally go forth looking for combat to approach your fate bravely. Christians had attempted to convert people in Scandinavia for centuries by this point, ultimately to no avail. In fact, many Vikings recognized the Christian desire to convert them and went along with it for political gain. One such example was Rollo, who, in 911, after raiding Francia, was given this land in Normandy, which was probably the land he was occupying. He was officially given it on two conditions: prevent raiding from other Vikings and, of course, be baptized. For many Vikings, baptism was a sincere act of conversion, and for others it was just a thing Christians wanted you to do after they paid you off. अच्छा बाबू भाई, ईसाई धर्म अपनाते थे, उसमें बहुत सारे ऐसे थे लालच के लिए, अपने मतलब के लिए बस ये कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। बस राजनीति चलती क्या है, पहले कई राजा है ना, वो ये क्या करते हैं, बड़े धर्म कोई सा भी होता है, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, चलो वाला काम था। In fact, some Vikings complained that the baptism they were just given wasn't as nice as their last one. So back in Norway, things were starting to heat up. Harold Fairhair died around 930. His kingdom fell apart, and what remained went to his son Eric I, better known as Eric Bloodat. ये तो सबसे अंतर्गत रहेगा, ऐसा भी अब देखते हैं आगे क्या होगा। बेटा आ चुका, एंट्री हो गई बेटे की। He was kicked out in 933 by his brother, the new king Hakon, also known as Hakon the Good, and Eric went off to rule Dublin and Northumbria. Hakon was, as his name suggests, a pretty good king and sought to strengthen his realm. He was also a Christian and attempted to convert his subjects, but once he realised they were pretty annoyed with the whole Jesus thing, he himself went back to worshipping the Norse gods. By the mid-10th century, Denmark was still divided into many kingdoms, and it was this one, the kingdom of Jutland, which was ruled by a man called Gorm the Old. Gorm, being old, died in 958 and was succeeded by his son, Harold, better known as Harold Bluetooth. अरे ब्लूटूथ मोबाइल होता है, ये कौन सा ब्लूटूथ है भैया? तो ऐसा तो नहीं महान के चक्कर में नाम रखा हो ब्लूटूथ? हाँ ये भी सोचता है। अच्छा वो भी बहुत उथल पुथल चालू हो गई है। अच्छा कुछ साम्राज्यों के अंदर भी छोटे छोटे जो है कि राजा बैठे हुए हैं। हाँ बैठे, उनसे भी लड़ना अभी तो। हाँ ये तो वजह भैया आपसी मतभेद के चक्कर में कई सब खत्म हो चुके हैं। Harold would go on to conquer the entirety of the now Gormless Denmark, which is one of the reasons he's so famous. The other is that he converted to Christianity. This was after he attempted to raid the Holy Roman Empire under Otto I in 960. Harold lost and thus was made to convert, but be aware that there were already many Christians in Denmark, such as those who had returned from the Danelaw. So one thing you'll have noticed throughout this episode is that I keep saying how we don't know much for certain. So how do we know anything about the period? The primary sources are often from outside of Scandinavia, like those from England or Francia, but there are two important Scandinavian sources. The first were the Jelling stones, which were inscribed stones which were made at Jelling, the old capital of Jutland. The major ones were made by Harold Bluetooth to celebrate both the unification of Denmark and its conversion to Christianity. अब आप देखो बाबू भाई कि ईसाई धर्म का प्रभाव ऐसे पड़ा पूरे यूरोप के अंदर धीरे धीरे करके। अच्छा ये रोमन साम्राज्य था, इससे ये साबित होता है कि ईसाई धर्म को फैलाने में रोमन का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ वो बिल्कुल सही बात। The other source is the sagas, mostly from Iceland, which were narrative stories written hundreds of years after the events they spoke of. Hence why half of what is written in the sagas is seen as semi-legendary, not strictly trustworthy. So back to Denmark, the rest of Harold's reign did see him depose King Hakon the Good and replace him with his nephew, Harold Greycloak. Greycloak did basically nothing except die in 970, and so Harold declared himself to be the king of Norway too. This would mark the high point of Harold's reign, since in 986 he was deposed by his son, Sweyn Forkbeard. Sweyn Forkbeard's reign is frankly a bit of a mystery. अब तो वही चली मारा मारी और थोड़ी देर नहीं हम चले गए गद्दी की लालच इनको मौका करे उसने। अच्छा बाबू देखो सिंहासन के लिए कितने लड़ना हो, एक जगह मामला ठीक ही नहीं रहा। जिसको देखो सिंहासन चाहिए हमारे को तो बस। After taking the throne, he appears to have either raided England and Scotland for about a decade or was exiled there by his nobles and the Swedish king Eric the Victorious. In 995, he appears to have lost Norway to Olaf Tryggvason, who undertook converting it to Christianity with some success. Slightly after this, the Swedish king Olaf Skirtkonung would do the same thing in his realm. Again, the problem with Swedish history at this point is that nobody can say for sure what was going on. ये भी सब आर्टिकल बता रहा है बाबू भाई, मतलब उनका भी इतिहास को जो है कि ज्यादा ठोस नहीं है, एक आधार के ऊपर बता रहा है, तो लिखा नहीं गया होगा शायद। It's pretty certain that the Svea had conquered the Geats to the south, but their northern borders are basically unknown.
Up in Iceland, a man called Eric the Red was banished for manslaughter in the late 10th century. Shortly afterwards, he stumbled across and then settled Greenland. Eric's son, Leif Erikson, would then in the year 1001 discover North America. देखो बाबू, वाइकिंग इस तरह से पहुंचे थे अमेरिका में. Columbus. There were some temporary settlements in North America, but for some reason they didn't last. And thus North America wouldn't see European contact again for nearly half a millennium. Sweyn would at some point return to Denmark, and after the death of Tryggvason in the year 1000, he reclaimed Norway. वो अमेरिका चला तो गया था वो, लेकिन जैसे अमेरिका आज की कंडीशन में है, उसके कंडीशन वो ऐसा नहीं बच पाए, इसलिए वो वहाँ पे वापस आ गया. He went back and forth raiding England for many years, and in 1013 he managed to seize it for himself and become king there. दो साहब जैसे इलाके में ना कब्जा कर लिया कितनी बार. अब तो मतलब बाबू ऐसा लगता है कि सोने की चिड़िया हाथ में आ गई उसकी. बिल्कुल आ गई. Thus beginning England's royal house of Denmark. He died the next year, and his son Canute would begin his rule in England 2 years later. By 1028, Canute ruled all of these lands, now known as the North Sea Empire. Canute died in 1035, and his kingdoms were divided and fighting broke out. एक मजबूत राजा आता है, बेहतरीन साम्राज्य खड़ा करता है, उसके मरती उसकी औलादें जो है कि आपस में लड़ खड़ी होती है, जिसके चक्कर में जो है कि आपस में वो राज्य भी चले आता है, खुद भी मर जाते हैं. The kingship of Canute would be used by his descendant, the King of Norway, Harald Hardrada, who in 1066 landed in Northumbria with the intent to take England's crown for himself. This went pretty well for his enemies, since Hardrada got himself killed. 1066 and the death of Harald Hardrada is considered by many to mark the end of the Viking Age. यार बहुत छोटे समय के लिए था, लेकिन मुताबिक बहुत करो इन्हें भी. देखो बाबू कौन से इलाके में थे वो, कहाँ से हजारों किलोमीटर कहाँ से कहाँ पहुंचे, फिर हजारों किलोमीटर पूरी यात्रा करते करते जो है कि वो अमेरिका ही पहुंच गए. देखो आप कम समय में. अच्छा नाम कमाए इन लोगों ने भी. The reason for this is largely because the Viking nations were a part of the Christian world and were no longer able to raid with impunity or even defeat their enemies. Denmark, Sweden and Norway were Christian kingdoms just like any other, and so there were rules. You couldn't simply take a kingdom now just because you wanted it. You couldn't turn up and raid, murder or enslave your fellow Christians anymore. That's not to say that nobody from these places ever raided again. They did, and the Norwegian holdings in the British Isles would remain theirs until the 15th century. बाबू भाई ये वो समय आ गया कि अब संधि लिखाना चालू हो गई. ये अच्छा नियम था कि आपको तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. इस सब कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति नजर आ रही है मुझे. The legacy of the Viking Age is extremely far-reaching. This period did not settle the issue of Scandinavian borders, but it taught the rest of Europe that Scandinavia was not something it could ignore anymore. Obviously, one legacy is that it spread the Scandinavian culture to the Faroe Islands, Iceland and Greenland. सही बात है, यानी कि मान लीजिए कि उन्होंने अपना सिक्का तो जमेला और साथ में अपना दोहा भी. They changed language and the politics of much of Western Europe, and whilst Hardrada had failed to subdue England, it was William, the great-great-great-grandson of Rollo, who would conquer it immediately afterwards. I hope you enjoyed this episode, and thank you for watching. Special thanks to Thomas Gestrich, Adam Harvey, Winston Kaywood and James Bisonet. If you'd like to learn more about the Viking Age, there are some book recommendations in the description below. अरे बिल्कुल जानेंगे यार. बाबू भाई अपना ये जो वाइकिंग्स थे कोलंबस से पहले अमेरिका पहुंच गए थे और इतनी उथल पुथल कर दी थी उस इलाके में. मैं समझता हूँ आज भी उनकी संस्कृति के वाइकिंग संस्कृति के छींटे तो होंगे यूरोप देश के ऊपर बाबू कहीं ना कहीं. यार भाई वो इतने बड़े हुए हैं, उन्हें शासन भी करा, राज्य को करा, तो संस्कृति की क्या उनकी औलादें पूरे यूरोप में फैली होगी. हाँ बाबू भाई हो सकता है. बाबू दूसरे जो एम्पायर उन्होंने बहुत लंबे लंबे अरसे से राज करा, लेकिन ये जो एम्पायर वाइकिंग ये जो है ज्यादा लंबे समय पर राज नहीं कर पाई, लेकिन जो है कि बहुत कम सेना ने बहुत बड़े मजबूत इलाकों पे जो है कब्जा करा. वाकई इस दिलेरी की तो जो दाद दूंगा है. और मेरा एक दिमाग और चल रहा है कि बाबू भाई ये राज करते करते जो है कि ब्रिटेन साम्राज्य को भी हरा सकते थे, इतने ताकतवर होंगे. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपस की जो फूट थी नहीं वो इनको दुख दे गई आपस में लड़ना. अबे ब्रिटेन में तो उन्होंने राजी कर लिया था नहीं, एक तरह से उनको हरा दिया था. तो कौन सी कीमत करी थी मेरे भाई. मतलब जैसे कि इसे रोमन साम्राज्य है, ग्रीक साम्राज्य, तो ये वाइकिंग भी आज भी जाना जाता. वाइकिंग साम्राज्य अगर ये आपस में लड़ते नहीं तो ये बहुत नाम करते हैं और ज्यादा. अरे भाई रोमन से लड़े हुए जो रोमन ने इनको हरा दिया था. अगर रोमन हार जाते नहीं तो इनका बहुत नाम चलता है. लेकिन वो उसको रोमन को हरा नहीं पाए. मैं समझता हूँ में बहुत बड़ा योद्धा हो गया और इतनी बड़ी ताकत को उन्होंने ऐसी नहीं बना ली उन्होंने. मतलब बाबू भी मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा याद आया कि वो जो था अपना मंगोल का चंगेज खान, मुझे थोड़ा थोड़ा उसकी याद आ रही थी. वो भी छोटे इलाके से निकला था और कितने बड़े इलाके में फैल गया था. ये भी छोटे से इलाके से निकला, कैसे दुनिया में फैल गए थे. आखिर कुछ होगा तो आज वो इस मकाम पे पहुंचे होगा.
भाई आप इनको मंगोल से मत मिलाओ। मंगोलों तो बहुत समय तक राज करा और आदि दुनिया पे राज करा। इन्होंने बहुत समय में बहुत कम करा। तो आप इनका उनका मेल तो आप मिलाओ मत। तो सर ये अक्सर ऐसा होता है कि छोटे छोटे कबाइलों से कुछ ऐसे योद्धा खड़े हो जाते हैं कि अगर उनकी वो दिमाग फिरक जाता है नहीं सर, दिमाग पलट जाता है, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि लड़ना, और सर वो उनकी जो अंदर की वो रहती है इच्छा शक्ति, उसके कारण सर वो जो है कि हराने का जज्बा रखते हैं बाबू। ये बात तो मैंने अंदर लगा लिया कि यार अगर इंसान के अंदर जज्बा हो तो इस तरह से वाइकिंग जैसी मिसाल भी बन सकती है। बड़े एक बात का ध्यान रख, अवसुकता ही आविष्कार की हम जन्य होती है और उनको जरूरत है फसल की और इसकी। अगर उनको ये जरूरत अगर पूरी हो जाती है तो वहां से निकलते वहीं को में रहते। हाँ यार बाबू यार, बड़े बाबू ये कहते हैं यार कि अगर अपनों को आपको कामयाब होना, बड़ा नाम करना, पैसा कमाना, अपनी जगह छोड़ो और आगे बढ़ो, दूसरे इलाके पे निकलो। वाइकिंग्स का जो साम्राज्य था बाबू भाई, पेचीदा और अलग हटके इतिहास मिल गया बाबू भाई। अभी तक तो रोमन, ग्रीक, कोलंबस इनके नाम सुने थे, लेकिन यार वाइकिंग्स, सलाम है इन भाई साहब को जिन्होंने ऐसे छाट के और खोजबीन करके हमारे सामने इतनी शानदार जानकारी प्रस्तुत करी। और मिलेंगे इसी अच्छी और बेहतरीन जानकारी के साथ। जब तक के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।